नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज हम चंद्रयान-3 की सफलता को केंद्र में रखकर बात करेंगे सफलता के नए आयामों की। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के जरिए भारत ने इतिहास रचकर भविष्य की नई उम्मीदों को जन्म दिया है और इसरो के चंद्रयान-3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतरकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्यों को उजागर करने में भी जुट गया है। इस मिशन के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को और पुष्ट कर दिया है। इस मिशन ने विकसित भारत के प्रण को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है और अगले 25 वर्षों के लिए अंतरिक्ष के माध्यम से भारत का उत्थान शुरू भी हो गया है। अंतरिक्ष में विस्तार लेती भारत की शक्ति पर नजर डालें तो भारत अंतरिक्ष में अब तक 424 विदेशी उपग्रह भेज चुका है। 389 विदेशी उपग्रह पिछले 9 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं। विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण से 17 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर अर्जित किए गए हैं। 15 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर पिछले 9 वर्षों में आए हैं। विदेशी उपग्रह प्रक्षेपण से 25 करोड़ 60 लाख यूरो भी आए हैं। 22 करोड़ 30 लाख मोदी सरकार के 9 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए हैं। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था भविष्य में समग्र आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतरिक्ष तकनीक रॉकेट लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्रीय विकास के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष तकनीक ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को छुआ है। दूरसंचार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आपदा चेतावनी के लिए ये प्रभावी तो है ही, साथ ही जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, नेविगेशन, रक्षा तथा शासन के लिए भी कारगर है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भूभौतिकी, टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। दोनों ही वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एस उन्नीकृष्णन जी हैं, वैज्ञानिक, इसरो चंद्रयान-3 के निर्माण में अहम भूमिका रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर जी राजू भी हैं, प्रोफेसर एरोस्पेस विभाग, जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु, फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसरो। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का। सर, अगर बात करें उन्नीकृष्णन जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड द सक्सेस ऑफ Chandrayaan-3 and rover Pragyan has started working. If we talk about its objective, what is it going to achieve there? क्या कुछ हम लोग अब हासिल करने वाले हैं चंद्रयान-3 के जरिए? Yes, the historic journey of Chandrayaan-3 started on July 14th when LVM-3 injected the Chandrayaan spacecraft into the required orbit from Sriharikota. Ever since then, it was doing the Earth-bound maneuvers. Multiple times it has raised its orbit. And then after some time, after acquiring the required velocity, it has escaped the Earth's gravity field. And through the translunar injection trajectory, it was moving towards the moon and then traveling for a few days. It has reached the moon's gravity. There, further, velocity was reduced by the propulsion system, and the Chandrayaan spacecraft was captured by the moon's gravity. And now it is in a long orbit, like what the reverse of what we have done on Earth. Earthbound, it was carried out around the moon. That is, you reduce the velocity gradually. Thereby, the elliptical orbit was brought to something like a circular orbit. And finally, the around 100 kilometers above the moon's surface, you know, there is no atmosphere in moon, so you can stay at any orbital height, unlike around Earth. Earth, because of atmosphere drag is there, you have to go to minimum 300 kilometers above. Then only we can have a stable orbit. So from the 100 kilometer, the lander got separated, and the lander has come to an orbit of 134 by 25 kilometer. And from 25 kilometer, it has made the historic landing. At that time, the lander was having around 1.6 kilometer per second. That is, every second it is traveling 1.6 kilometer. And then using the 480 kg thrusters on the lander, the course breaking phase, that is around 11 minutes, thrusters were fired and the velocity was brought down.
further, the next phase was the fine braking phase. And after that, around 800 meters above the lunar surface, lander was just hovering and looking at the appropriate place. Subsequently, with the zero velocity, zero horizontal as well as vertical velocity, it's just like a helicopter, it was hovering. And then it has come down smoothly, and the specified landing velocity was 1 meter per second, but it has touched less than 1 meter per second at a place which is very close to the designated place. And then it has made history that we landed on the southern part of moon. And after landing, of course, you know, the gravity of moon is just 1/6 of that of Earth. So the dust will be ejected, so we need to wait some hours. And the ramp from the lander was opened, and the rover has come out. Rover is moved up to 10, 12 meters. It has moved, and rover, lander, and all the payloads, they have started functioning. So it is 100% success. The mission has been accomplished successfully. ताली होनी चाहिए इस पर। डॉक्टर राजू, आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आप तालियों की गड़गड़ाहट लगातार सुन रहे होंगे। यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं आप दोनों से। लेकिन उससे पहले आपको कितनी खुशी हुई है इस अभियान के सफल होने के बाद, और आगे क्या? ये तो बहुत इंडिया का, हमारा देश का गर्व, an occasion to be very proud of, and we are claiming to be the very first people to go to the south pole of the moon. It's a very, very breathtaking time when I was watching the last moments of landing of the lander around 6:04, because at the time we were last time had some problem, but after it landed, all of us are extremely excited, and we are proud of all the people who have contributed. Although I am not presently directly connected with the people who have developed it, there are many people who were with me during my days in ISRO. So I'm very proud of my juniors and all the other seniors who have directed them very well. Now coming back to the today's situation, today we are more anxious, enthusiastic to see what we are getting from the surface of the moon. हमको वहां से मून की सरफेस से क्या मिल सकता है, वो इसलिए वो दो इम्पोर्टेंट पेलोड्स हैं जो प्रज्ञा के ऊपर अभी धीरे धीरे चल रहा है। all the equipment have been tested, mostly they are all working very well, and we are expecting exciting results. For example, one of the payloads, one of the instruments is to tell us what is the composition of the surface of the moon, what is the soil made of, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, वो सब हमको अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, and I'm sure they'll be very, very excited in the next 2 weeks. अभी 2 वीक का इसका काम चलता है। Why 2 weeks? 14 days on the moon. 14 days on Earth is equal to 1 day on the moon. तो ये जो इक्विपमेंट है उनका काम only work only with solar panels. वो 14 दिन भूमि में, 1 दिन चंद्रमा के ऊपर, तो सनलाइट काफी है। और ये 14 days में our Pragna rover will go almost every 1 minute slowly towards the destination all along the moon. And certainly we are looking forward to not only from Pragna, we have very well equipped orbiter, 8 high technology payloads are there. We have 4 payloads on the lander itself. One of the very exciting instruments is to see moonquake. Like जो हम earthquake देखते हैं ना, वैसे ही moonquake, कोई ट्रेमर हो सकता है, कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगाया है। उस इंस्ट्रूमेंट से
बेसिकली उसके ऊपर एक्सेलेरोमीटर माउंट किया है, थ्री डायमेंशनल पिक्चर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और लैटरल, मतलब तीनों एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कैसे वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम पता कर सकते हैं कि मून के ऊपर कोई मून क्वेक होता है या हो रहा है, उसके जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। That's one of the things. Secondly, we are trying to analyze through several instruments. Only one or two I will tell you. The Rambha, radio anatomy of moon-bound hypersensitive atmosphere and ionosphere. इसका मतलब मून के एटमॉस्फेयर में बहुत चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसको डिटेक्ट किया है, और कितना वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए, हमारा जानकारी के लिए कितना वॉल्यूम है, कितना, उसका क्या नॉर्मली भी से टोटल इलेक्ट्रॉन कंटेंट, टेक वैल्यू, टीईसी, उसका बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे सकता है। और उसके लिए भी बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट लगाया है। ये सब टोटली अबाउट 11 इंस्ट्रूमेंट लगाया है। उसके लिए हमारे all scientists are certainly waiting for it, and particularly I want to emphasize ये आज के स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च फैकल्टी के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए बहुत exciting moments. We can have a lot of topics, what a problem solved. Students from undergraduate, my experience is that graduates, I am working in Jain University, and I'm sure many of our students across the country, across the world, may take interest to make use of the unique experimental results. जी So इसके बहुत carefully studied from a long time. After many years, our instruments will give us what we have expected. That is where we are now waiting for. In the next few days, I'm sure there'll be a lot of flashes. मतलब many रोमांचकारी रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसके लिए हम सब बैठे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं। थैंक यू। जी, और आपने स्टूडेंट्स को याद किया, और मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, कुछ अपनी बात भी साझा करना चाहते हैं, कुछ जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। भारत का खगोल के क्षेत्र में बहुत पुराना योगदान रहा है, चाहे वो आर्यभट्ट का जीरो से लेकर के फिर चंद्रयान-1 के द्वारा, फिर चाहे पानी की खोज करनी रही हो। चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम, टाइटेनियम और कैल्शियम जैसे कई सारे खनिज हैं जिनका प्रयोग हम विकासशील देश के रूप में कर सकते हैं। तो इस बारे में हमारे क्या योगदान होने वाला है, हम इसको किस तरीके से देखते हैं भारत के विकास के क्षेत्र में? जी, very congratulations to the ISRO team for first I want to say, and also it's a ताली हो जाए proud सब। moment. Sir, my question is regarding the funding issue. We see that ISRO is facing various funding issues. So I want to ask that if we invest more funds into the ISRO, so every investment has the opportunity cost, which we have to suffer, which you have to see. So क्या इसका जो रिजल्ट आएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन का, वो उस कॉस्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है या कर पाएगा फ्यूचर में? सर, मेरा प्रश्न ये है कि आर्यभट्ट जो हमारी प्रथम सैटेलाइट थी, वो इसरो की रशियन एजेंसी रोसकॉस्मोस की मदद से हमने इसको सबसे पहले लॉन्च किया था। आज लूना 25 जो चीज़ को नहीं पा पाया, वो हमारे देश ने कर दिखाया। सर, हमारे विश्व गुरु बनने के क्षेत्र में ये कितनी बड़ी सफलता है। So firstly, congratulations to ISRO, to all the scientists of ISRO from the student community from whole of India. सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम 1999 में जब करगिल का युद्ध लड़ते हैं तो हमें GIS टेक्निक में दिक्कतें आती हैं। 2019 में हम ऑपरेशन शक्ति कोड नेम के तहत एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा ऑपरेशन जारी करते हैं जिससे हम सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकें। एंटी सैटेलाइट ऑपरेशन सर हमारी किस तरीके से एप्लीकेबल हो पाएंगी कि हम उनका प्रयोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए अभी और आगे आने वाले 25 सालों में कर सकेंगे? कुछ सवाल ले लिए हैं। डॉक्टर उन्नीकृष्णन जी, मैं चाहूँगा आप पहले इनका जवाब दें। एक तो हम लोग पहले से वैदिक काल से ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ करते रहे हैं, बहुत आगे थे पूरी दुनिया से। और दूसरा सवाल ये कि हम रशिया के सपोर्ट से हम लोगों ने अपना पहला मिशन शुरू किया था। आज रशिया का एक मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। भारत सक्सेस
जो है उसको हासिल कर पाता है। क्या कुछ बदल गया है इतने वर्षों में? कहाँ हमारी ये जो जर्नी है अंतरिक्ष की वो कहाँ पहुंच गई है? First of all, thank you, all the students, for your congratulatory and other greetings. And I also want to greet each one of you because it is the achievement of 140 crore of Indians. All of us together, their dreams and prayers are out there, also contributed in making this mission a huge success. Secondly, in terms of science missions, you know that every launch vehicle mission, there is an inherent risk in it. So when we say Russians could not make it, as a scientific fraternity, I feel sad for it because that also would have added more value to the science. And it is that shows how difficult it is to land on moon. You also recollect a few months back, a Japanese probe also nearly crashed. They made a wrong judgment of the height because there is no atmosphere in moon. When it is re-entering Earth's atmosphere, like say for example the Gaganyaan capsule or the space capsule recovery experiment, when it leaves the Earth's atmosphere and it re-enters, but see the 98 to 99% of its energy, it has huge energy by virtue of its potential energy because it is at a height, orbital height. Secondly, it is moving at very high velocity. Around Earth's orbit, it is around 7.8 kilometer per second. So it has huge energy. All this energy was supplied by the launch vehicle for taking it above to that orbit. You know that to keep it in an orbit, you need some minimum velocity. So during Earth's re-entry, 98 to 99% of the energy is killed by aerobrake. And the final 1% or 2% only we are deploying the parachute or a braking motors to make it softly landing on Earth. But in Moon, there is no atmosphere. So the entire and then the gravity itself is varying from place to place because of the terrain. And then we totally depend upon propulsion and then measuring the height from the ground and then gradually killing the velocity. So it's a technologically challenging to soft land on moon. So that way, it was a great achievement for the entire country. The other questions asked, yes, definitely, moon is a intermediate pose for you know that in 1969 the first moon landing, humans landed on moon. Subsequently, there were 6 missions. Altogether, 12 people have walked on the over moon. But then there was not much interest for this moon exploration. But we see last 10 to 20 years, again, there is an interest. Moon as an intermediate post. Even if you want to go, you know that Mars is as a planet which has got some similarities of like Earth. It has got a very thin atmosphere, maybe 1/100th of that of Earth atmosphere, but it has got an atmosphere, and it has day and night more or less something equal to Earth 24 hours. So the scientists feel that in our solar system, if there is a place where you can go and habitat, is the Mars. So Mars is, we know that with the present propulsion, it is far away. So Moon is an intermediate place. So Moon is an intermediate place for, of course, for going to other planets, and that is how the USA has got an Artemis program where they are planning to have a space station around Moon, man-centered space station. जी So this Moon has got more significance in terms of as an intermediary place as well as resources. So we, remember that in Chandrayaan-1, the presence of water near the poles, especially the South Pole, was detected. बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार छात्रों के बीच शोध बढ़ेगा या रिसर्च बढ़ेगा चंद्रयान 3 या इसरो के अलग अलग प्रोजेक्ट से। सर मेरा सवाल ये रहेगा कि इसरो विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर किस प्रकार की स्कीम्स ला सकता है जिससे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इसरो प्रोग्राम्स के साथ जुड़ें और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें या कम से कम अंतरिक्ष के जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनसे उनका परिचय हो सके। With the failure of Chandrayaan-2 in the year 2019, we see that India has learned certain lessons from it. And as we know that mistakes are the best lessons and they take us to success in any other way that's possible.
So, in respect to that, what are the technical and the operational changes and advancements which have been made in the organizational structure of ISRO and also in the two models? Please throw some light on that. जैसा कि सर किसी भी राष्ट्र के उसको मापने के लिए एक पैमाना है, वहाँ की सूचना प्रौद्योगिकी कितनी विकसित है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश को विकसित राष्ट्र की गिनती में लाने के लिए हमारी तकनीक और विकास कितना आगे बढ़ा सकता है। प्रज्ञान और विक्रम में जो भी पेलोड्स हैं जो कि वहाँ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, तो हमारे चंद्रयान 3 मिशन द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से, इंफॉर्मेशन से इन जनरल ह्यूमन सिविलाइजेशन को और हमारे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में? पहले सवाल आई वुड लाइक टू आंसर द गुड क्वेश्चन। जी अच्छा, यूनिवर्सिटीज में फॉर एग्जांपल इसरो विल सर्टेनली सपोर्ट। क्वेश्चन वाज what can we do from the student community related to research. Before that, I would like to some of my earlier students, they have already got into a different phase of their career. They have all made startups, learning something from the ISRO and other achievements. Second, the other one is ISRO announces frequently what is known as AO, announcement of opportunity. A program called Response, sponsored research. So ISRO welcomes particularly students and faculty to give proposals, and they'll give you funding based on the quality and the merit of the the problem or the proposal. You can go to ISRO website. Primarily, I'm telling you about the Respond project, and I have already got, I should say, I may have got opportunity to work in the previous missions like the navigation using Indian constellation. Respond is a general sponsored project. There are also opportunities for getting these data from Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3. So certainly, आपके लिए it is very easy to access the scientific research. ISRO will announce. I am hopeful. Chandrayaan-2 already announced. I have seen that they have invited proposals. Chandrayaan-3 maybe totally including the Chandrayaan-2 orbiter, lander and Pragya. उसके लिए भी इनविटेशन आ सकता है, सर्टेनली आ जाएगा। और इसके लिए आपको फंडिंग का सपोर्ट मिल सकता है, और रिसर्च स्कॉलर्स के JRF इक्विवेलेंट के लिए भी आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, और इक्विपमेंट के लिए भी थोड़ा सा they will check with your proposals and all the support will be given. So please look for the announcement of opportunity for Chandrayaan-3. Based on my earlier experience, yes, there will be announcement from ISRO inviting the faculty, the academic circles, the students to take part, because you are the future. The next Chandrayaan 4 or 5 or future Mars or Gaganyaan, all these things are on your shoulders, the students of today. So certainly ISRO will invite proposals from the community, from the student community and the faculty. जी This is one thing. So second, I hope I have answered the question. There is already an open invitation. It is happening for the past many years, but there's certainly, this is applicable to Chandrayaan-3. Navig in IRNSS has been already been given to, the equipment has been distributed about 40 plus or even more universities free of cost. They have supported experiments, applications, scientific results to be done using these Navig reverse given to the university. जी Then we have now waiting for Chandrayaan 3. Certainly it will come. Now the other question asks, what do we gain from these measurements? Yes, a very good question. We have one of the payloads looking for minerals on the surface of the earth. That is calcium, magnesium, titanium, iron, all those things. They are all useful today. We are not able to bring samples in today's scenario. We are not able to do, get those samples. Of course, there are many experiments done by others, but today we are able to go in situ measurements. Orbit से देखना अलग बात है. 100 किलोमीटर हाइट से देखते हैं ना, उसमें से कुछ एरर हो सकता है, मगर प्रज्ञा से ऑन द स्पॉट
इन सीटू मेजरमेंट करने से आपको एग्जैक्ट जी। रीडिंग मिल सकता है. There are a lot of enthusiasm among students. Startups are coming. I don't know how many of you have visited the startup enclave around Bangalore, where I saw 100 plus startups, youngsters trying to catch what I can do for in space privately. And you know that there are already launch vehicle group working on that privately. They launch, they're able to launch. There are groups which are working payloads and satellites. So certainly, by using this kind of motivation, the factor is that you students can jump into this arena of space research, space development, and tomorrow we can certainly be a focal. Today, as we are able to launch vehicle, as we are able to do launch vehicle, certainly we can supply more and more of this in terms of science and technology and satellites, where I'm emphasizing younger students, younger generation, as a whole of India through these startups. And it's a wonderful opportunity for all of us to motivate students. Students have interest to take care of this further. And certainly this will be a very good Atmanirbhar for achieving our Atmanirbhar capabilities, where we don't have to depend very much on other countries. This is the one very important milestone. Chandrayaan-3 or all this Chandrayaan 1, 2, 3 is a milestone for technology and science. Both are very well, achieve very well recorded achievements. So I'm sure students will take it forward. Opportunities will be given by the government, by the ISRO, and certainly I'm sure this is the beginning of your research, your development, your carrying forward to go to Chandrayaan 4, 5, and also land on the moon. Humans can land on the moon. For जी। example, I just wanted to give you that one example, what the Japanese have done to get 2 grams. They went and landed on an asteroid. That was 900 crores worth of investment to get 2 grams of the sample. Why I'm telling this is the space research, the business is very expensive. We can certainly do in a smaller scales, and we have already achieved the major step of landing on the moon, and bringing back the sample from there is no big deal, the way I am looking at it. जी, And that लेकिन is आपने जो on बात your एक कही है shoulders. वो बात सबसे बड़ी है कि हम लोगों ने अपने जो है अंतरिक्ष अभियान से कहीं ना कहीं स्वदेशी के ऊपर हम लोगों ने बहुत जो है रिलाई किया है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो स्वदेशी होना बेहद आवश्यक है। और विकसित राष्ट्र के लिए सभी तत्वों को समाहित होकर काम करना जरूरी है। लेकिन विकसित भारत की अगर उड़ान भरनी है तो इसमें हमारे अंतरिक्ष अभियानों का जो है बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, उनकी भूमिका रहने वाली है। आप दोनों ने, डॉक्टर जी राजू आपने और डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन जी आपने समय निकाला बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।